हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। Hare Krishna. So, I'm going to talk about what is the need to practice spirituality or Krishna consciousness at a young age. So, why practice Krishna consciousness in youth? So, many people think there is an opinion that spiritual life is for old people. बूढ़े लोगों के लिए है भक्ति और नौजवानों के लिए बॉलीवुड मस्ती, राइट? लेकिन एक्चुअली हमारे वैदिक शिक्षा जो है उसका विपरीत है। हाँ, क्योंकि वैदिक शिक्षा जो है असल में हमारा सनातन धर्म में जो शिक्षा होती है, आई मीन शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? मिक्स, ओके। सो सनातन धर्म की शिक्षा में विद्या और अविद्या दो शब्द उपयोग किया गया है। अविद्या मीन्स मटेरियल एजुकेशन लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, sociology, history, and many different subjects like that, arts, commerce. These are all avidya, means material education. And there is another word that's called vidya. Vidya means spiritual education. Vidya refers to knowledge about soul. Who am I? And who is God? What is the goal of life? So that is vidya. Vidya का मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जीवन के उद्देश्य क्या है, हाँ, जीवन कैसे जीना है, और हमको मोक्ष कैसा प्राप्त करना है, परम सत्य को कैसे जानना। दिस इज ब्रह्म जिज्ञासा, स्पिरिचुअल इंक्वायरी, इसको बोलते हैं विद्या। सो देन देयर इज विद्या एंड अविद्या, राइट? देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. So the point is in the Vedic or in the spirit, in the Sanatan Dharma, in our ancient religion, हमारे सनातन धर्म में विद्या और अविद्या दोनों चीज़ों को अलग अलग बताया गया। और गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति में क्या होता था कि विद्यार्थी गुरु के पास जाते थे और गुरु के आश्रम में रहते थे। जैसे यहाँ पर हम कहाँ बैठे हैं, सांदीपनी आश्रम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। ऑल्दो भगवान श्री कृष्ण को कुछ किसी से ज्ञान प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, गीताचार्य, ठीक है। लेकिन फिर भी वो
ही सेट एन एग्जाम्पल, ऑल्दो मैंने कल IIT में लेक्चर दिया था वहाँ पर रोज के अपार्टमेंट में, सो वहाँ पर मैं बता रहा था दैट कृष्ण ब्रोक ऑल रूल्स इन वन सेंस। भगवान ने सारे नियम तोड़े हैं ना, कृष्ण ने, हाँ, चोरी किया, राइट, एंड he had apparently had affairs with many girls, right, and he had झूठ भी बोले, धोखा भी दिए, राइट, बट एक्चुअली उनका झूठ बोलना, धोखा देना और अफेयर होना इज नॉट लाइक आवर्स, हमारे ऐसा नहीं है। हाँ, हम तो मटेरियल अटैचमेंट के साथ, मटेरियल अट्रैक्शन के साथ हम काम करते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा कोई मटेरियल अट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए भगवान का एक्टिविटीज़ और हमारे एक्टिविटीज़ में बहुत अंतर है। भगवान झूठ भी बोलते हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, हम चोरी करते हैं तो क्या करते हैं, दे विल पुट यू इन जेल, राइट। कृष्ण चोरी करते हैं तो पूजा करते हैं, बोलते हैं माखन चोर मुरारी, है ना, माखन चोर के नाम से मंदिर बनाते हैं, लेकिन हम चोरी करेंगे तो जेल में डालेंगे, है ना। बट भगवान का चोरी करना इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। भगवान झूठ बोलते हैं, हाँ, तो भी हम ग्लोरीफाई करते हैं। हाँ, युधिष्ठिर महाराज से झूठ बोला है, राइट। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, भगवान श्री कृष्ण ने, कल मैंने जैसे बताया था कि ऑल्दो ही लाइड अपेरेंटली, युद्ध से कोई भाग जाता है तो कायर बोलते हैं। हाँ, भगवान खुद युद्ध से भागे, रणछोड़, वो अपने काल यवन के साथ युद्ध हो रहा था, तो युद्ध से भागे, काल यवन को लगा रहा, डर के भाग गए और पीछा कर रहा है, गुफा में घुस गए, और गुफा में पीछे ये भी घुस गए, कौन, काल यवन, और वहाँ देखा कि एक आदमी सो रहा था, भगवान तो चुप गए, तो काल यवन को लगा कि वो भगवान है, वो कृष्ण है, तो उनको लात मार के उठाया, और वो आदमी कौन था, मुचुकुंद था, उनको वर था कोई भी उनका नींद से जगाए, उनको देखकर उनको भस्म कर दे। तो कालीवन ने उसको लात मारा और वो आदमी उठा और उनको देखा, भस्म हो गया। हाँ, सो कृष्ण ने सोचा मैं क्यों मारूं, इनसे मरवा, इनके हाथ से करा देता हूँ काम। Like, you know, even Krishna, when he runs away from the battlefield, it's very beautiful. Whatever Krishna does is beautiful. He broke all the rules because he's God. Only to show that only I can break, you cannot break. रूल्स मैं ब्रेक कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो। राम ने बोला कि रूल्स फॉलो करना चाहिए और मैं करके दिखाऊंगा, और कृष्ण ने बोला रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए, मेरे लिए नहीं है। मैं ब्रेक कर सकता हूँ लेकिन आप नहीं कर सकते, राइट। सो यद्यपि ही ब्रोक ऑल द रूल्स बट स्टिल ही फॉलोड वन रूल, दैट इज ही वेंट टू गुरु। भगवान ने सारे रूल्स तोड़ा लेकिन एक रूल उन्होंने भी फॉलो किया, वो क्या है, गुरु के पास गए और उनके आश्रम में उनकी सेवा की। लॉर्ड कृष्णा वाज हियर, इसी स्थान पर, इज अ वेरी 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 सेक्रेड प्लेस। अगर आपको विद्या चाहिए, अगर आपको ज्ञान चाहिए, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्णा, भगवान है फिर भी वो यहाँ क्या करते थे, हाँ, गुरु की सेवा करते थे। कैसी सेवा करते थे, सबसे पहले उठते थे, सारे काम करते थे, कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर झाड़ू लगाते थे, गाय का गोबर उठाते थे, गौशाला साफ करते थे, जंगल में जाके लकड़ी काट के लाते थे, नदी में जाकर मटके से पानी भर के लेके आते थे, एक भी काम नहीं छोड़ते थे। और बाकी बच्चों को तो करने को कोई काम ही नहीं रहता था। They would do everything. There's nothing left to do. They were so active. और एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ से जंगल में लकड़ी काटने के लिए, यज्ञ के लिए लकड़ी काटने के लिए गए कृष्ण सुदामा के साथ। सो एकदम बारिश होने लगा, तूफान होने लगा और जंगल में फंस गए। लकड़ी तो काट लिए और ढेर कर दिया, मतलब दे हैव बाउंड इट, मतलब उसको एक गट्ठर बना लिए। लेकिन रिटर्न आते समय बहुत जोरदार बारिश हुआ और दे गॉट स्टक। वो जहाँ वो स्टक हो गए थे, दैट प्लेस इज स्टिल देयर, यहाँ से थोड़ा दूर है, नारायण गांव।
नारायण गांव है. तो वहाँ पर स्टक हो गए थे. होल नाइट दे वर शिवरिंग, मतलब सारे रात कांप रहे थे. एंड देन इन द मॉर्निंग जो गुरु थे सांदीपनी, he went, he was searching where is Krishna and Sudama. And early morning he came, he saw that वो कोई पेड़ के नीचे they were holding each other's hands, एक दूसरों के हाथ पकड़े थे, दूसरे हाथ में लकड़ी के गट्ठर पकड़े हुए थे. And in that way they were shivering. And he was so happy, he was so pleased with Krishna's service. कृष्णा और सुदामा की सेवा से इतने खुश हो गए गुरुजी. उन्होंने आशीर्वाद दिया कि whatever you speak, it will be eternal. Although he didn't need that आशीर्वाद, but still he got the chance to give that आशीर्वाद. तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जो कुछ कहोगे ना वो हमेशा के लिए रह जाएगा. इसलिए भगवद गीता हमेशा के लिए रह गया. Right? So why he got that blessing? Because he served the Guru. तो हमारे सनातन धर्म में ये है विद्या और अविद्या. तो सांदीपनी के आश्रम में दोनों सिखाए देते थे. He got in 64 days he learned 64 arts. You see those paintings, right? 64 arts. Each art has a particular title, right? उन्हें 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली है, 64 विद्याएं. तो ये सब सीखने के बाद भी लॉर्ड कृष्णा फिर उनके गुरु सांदीपनी ने कहा, उनसे पूछे क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं. हमारा बेटा मर गया, उसको लाइए. इज इट पॉसिबल? नो. बट फॉर कृष्णा नथिंग इज इम्पॉसिबल. सो ही वेंट टू यमराज and that particular soul he brought and he restored his body also and then brought it and gave that baby back to his guru. So ऐसे गुरु दक्षिणा कोई शिष्य दे ही नहीं सकता, right? तो ऐसे गुरु दक्षिणा दिए. And we know the story of Sudama. सुदामा बहुत साल के बाद कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं द्वारका में. and he is very poor and the gatekeepers they say, who are you? I am Krishna's friend, Sudama. And they started laughing. You are Krishna's friend. How is it possible? He is a great king and you are nothing. But then when Sudama called Krishna and Krishna got the news, he started running. He came out and he embraced him. And he said, he immediately brought him inside and put him on his own bed. Rukmini, his main queen, washed his feet and drank the water. And in this way, for a few days they spent time with each other discussing their childhood memories. And Sudama was very shy. Krishna said, did you bring something for me? No, nothing. I have nothing. But he brought some old chipped rice. No salt, nothing. So Krishna said, no, you are hiding something. He just snatched it and started eating. And after some time, Sudama said, I'm going. So he went. Krishna did not give anything apparently at that time, but by the time he went back, he could not recognize, this address is correct. Hare Krishna. Change the batteries. Hare Krishna. Hare Krishna. Huh? So he could not, he said that I came to the right address or wrong address. So then he understood that I came to the right address. And he could not even recognize his wife, because his wife is totally different. I mean, her appearance and her entire attire has changed. So then he realized it's Krishna's miracle. So Krishna, so in our Vedic culture there is Vidya and Avidya. So therefore there is an age. There is an age for education. Why in any university or college only a certain age group people are allowed? Because there is an age for education, right? After that age you cannot study. So therefore
So after that particular age, our studies becomes, it doesn't go into your head. Your ability to grasp goes down, right? Hare Krishna. So what is the age for studies? The age for study is young age, right? So therefore, even for spiritual knowledge, the age is now, right? अगर आपको डिग्री प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर एज के अंदर करना पड़ेगा, तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए क्या कोई एज लिमिटेशन नहीं होता है? उसमें भी यंग एज में करना जरूरी है. सो देयरफॉर because the right age for education is young age. Therefore, in the Bhagavatam, Prahlad says to his friends, प्रहलाद जी अपने दोस्तों को बोलते हैं कि प्रहलाद तो असुर हिरण्यकशिपु का पुत्र था, son of हिरण्यकशिपु. But then his friends, they were all demons, demoniac children. और उनके गुरु शंड और अमर्क उनको सारे अविद्या सिखाते थे, politics and many other things, right? But Prahlad did not like those things so much. So when the gurus were outside, what he would do is he would call all his friends and he would tell them, why are you wasting your time, right? And he gave a whole account of your life. How many years you would live? Maximum 100 years. And in 100 years, first almost 20 years are gone, right? In young age, playing and having fun and so many things. And then last 20 years are gone in old age. Yes or no? Old age person cannot think, he cannot walk, he cannot talk, he can't do anything. So आखिरी 20 साल चले गए बुढ़ापे में, पहले 20 साल चले गए बचपन में ना समझ होकर. फिर बचे कितने? 60 साल. और वो 60 साल में आधा समय चले जाता है खाने और सोने में. खाना, सोना, नहाना, धोना सब मिला कितना टाइम लग जाता है? आधा दिन या उससे ज़्यादा भी लग जाता कई बार. तो आधा समय तो चला गया, बचा कितना? 30 years gone. So 30 years left. So in the remaining 30 years also, 75% of the time is gone in, or more than half is gone in earning money. For earning money you have to work, and or you have to do business, whatever it is. It takes a lot of time. So out of 30 years, 20 years gone. What is left? 10 years. Hardly. In that also you need entertainment, parties, fun, this and that, so many things. So hardly you have any time left to understand what is the real goal of life and to be happy, to get real happiness, right? So Prahlad is telling his friends, why you are wasting your time with all these games and sports and unnecessary activities? They are spending so much money for this, what is that? What are those games? Olympics and that Asian games are going on, no? What is it? Yeah, Asian games and so many things. कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, right? And if you want to have a spiritual discourse, they say, no, we are secular. So we don't have money, any budget. Government has any budget for spiritual knowledge, for propagation of spiritual knowledge? No. But they have a huge budget for unnecessary activities. So Prahlad is telling his friends, why you are wasting your time with all this unnecessary fun and all these activities? Rather, you should worship Krishna. So the friends are asking, why should we worship Krishna? Why not have fun? So he was saying that because ultimately we are all part and parcel of God. Everything is supplied by God. But God is waiting. मैंने इतना दिया, कभी तो मेरे तरफ देखकर
मुझे ध्यान देगा कि नहीं, right? You know that story? Person is walking. A person, rich man, from the top of his building, he used to throw money. People would come and pick up, but no one would say who is throwing. And he asked someone, every day I'm throwing money, but nobody is looking. What to do? So one day you throw stones, or you throw garbage. So he did like that. He started throwing garbage, and people started looking, who is this? Right? So every day he is giving money, but nobody is looking. So similarly, we are getting so many gifts from God. We are getting this sunshine, right? Water, food, and so many things. But we never have the time to say thank you, or to remember, like I am drinking this water. Very cool, refreshing water. But Krishna is saying, I am the taste of water. So when you drink water, do you think that the taste of this water is Krishna? He says, Prabhasmi Shashi Surya Yoho. I am the light of the sun. We are getting such beautiful sunlight. Are you paying any bill? No. एक बल्ब ट्यूबलाइट जलाते हैं तो उसके लिए आपको महीने का बिल आ जाता है, लेकिन इतना लाइट हम एंजॉय कर रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग एनी बिल, राइट? We are getting so many, we are getting oxygen, we are getting food, so many varieties of fruits, flowers and vegetables and everything. So we are not paying any bill. But Krishna is giving. But whenever you see the sun, you should remember Krishna. Whenever you drink water, do you remember Krishna? How many of you remember Krishna when you drink water? Sorry, that was not to remember Krishna because I am thirsty. So anyway, but still I am trying to remember. Anyway, so if you, at every step you can remember Krishna. We got this body, this human body. This is also a gift of Krishna. Because your parents did not plan, I want this particular soul as my son or daughter. Right? Or did you plan that I want this set of parents? No. So ultimately that is also Krishna's plan. Krishna gave us this body, Krishna gave us this food, oxygen, life, everything. So we should be very grateful. So Prahlad says that, therefore, because God has given everything to us, we should be very grateful to God. And not only that, he is also the dearmost person. सबसे प्यारा व्यक्ति कौन है? भगवान है. हाँ, क्योंकि कोई भगवान जैसा हमें प्यार नहीं कर सकता. क्योंकि इस दुनिया में कोई भी प्यार करता है तो उसमें क्या है? कंडीशन है, एक्सपेक्टेशन है. हाँ, आप थोड़े से गड़बड़ करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, राइट? हाँ, आप जैसा मर्जी वैसा करो फिर भी प्यार करेंगे, ऐसा कोई है? हाँ, माता पिता कुछ हद तक करते हैं, पर बहुत ज़्यादा बदमाशी करे तो वो भी बोलते तू मेरा बेटा नहीं, जा. So point is that in this material world there is no pure love. And regularly, very often, almost in every few days, someone comes to me and says, I have a problem with my love life. Yes, it's true. Many people, many people, they come to me with this problem. And they say that, they say things like, I don't want anything else. I'm totally obsessed with this, right? Why people are mad after love? Because originally we are meant to love God. But somehow because we forgot God, we repose that loving propensity on someone else.
So Prabhupada used to say, either you love God or you love dog. So you have a choice. Everyone has to love someone. So either you love the Supreme or you love someone in this material world. Therefore, the right age for learning all these things, Prahlad is saying, the dearmost person is God, because his love is unconditional. So the right age to learn is age of 5. There is a beautiful shloka in Bhagavatam. Would you like to recite after me, please? Kaumara acharet prajño dharman bhagavatan iha durlabham manusham janma tadapyadhruvam arthadam. So it says Kaumara acharet prajño. So intelligent person, he'll accept spiritual life at the age of कौमार. कौमार किसको बोलते हैं? 5 साल की उम्र को कौमार, 5 साल से 10 साल के बीच में. So you should practice spiritual life should start from the age of 5. What age? 5. Not 50. Right? 5. At the age of 5. Right? So how old are you now? 20. You are already 15 years late. According to this. So point is that 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए. अभी हम 20-25 साल की उम्र में बोल रहे हैं, we are too early, we have to enjoy. No. So point is, by the time you are old, your life is already done. It's no time for learning. कुछ नया सीखने का उम्र नहीं है. Therefore, the best use of time is at the age of youth. इसी उम्र में हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चाहिए. Right? And you make or break your life in your childhood. Like many people in a young age, they get bad habits. What happens? Whole life is gone. You pick up some bad habits, your whole life is gone. Or if you pick up some good habits, you can make your whole life. Yes or no? Yes. So this is the age you make your habits. This is the age you train your mind. This is the age you learn something of value. Right? So therefore at this age, instead of wasting time with your mobile phone or with your whatever, social media or social life or whatever you call it, rather invest your valuable time in learning something of eternal value. So that is what Prahlad Maharaj is saying. और यूथ ही पूरा दुनिया को बदला है. पूरा दुनिया में कहीं पे भी दुनिया बदला है तो किसके वजह से बदला है? Not old people. Is there any revolution started by old people? Only one exception is there, Prabhupada. Only Prabhupada is the exception. He started at the age of 70. 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए सिर्फ 40 रुपए लेकर, with no support, nothing, and he started a revolution. That's one of the rarest example we hear. Otherwise, any revolution, right? Even the independence movement, Indian independence movement was also all mostly young people, right? So any revolution, any change in society or in life is always started by young people. So young people want to do something different. Dare to be rare. Dare to be rare, we say. You should have the guts to be different than the society. And if you don't have the guts, then you want to follow the masses. Oh, the masses are drinking, so I will also drink. So the masses are watching movies, so I will also do. The masses are having illicit relationship, so I will also have. Masses are wasting time on
smartphones and all, I will also do. So what everyone is doing, I should also do that. That is a very insecure mentality. Insecure है, मतलब हम अलग होने का हिम्मत नहीं करते. एक बार एक राजा ने बोला, सारी जनता को बुलाए और बोले, आप में से कौन आपके बीबी के बात सुनते हैं और कौन कौन बीबी के बात नहीं सुनते हैं? जो बीबी के बात सुनते हैं वो इधर आओ, इस तरफ आओ, और जो बीबी के बात नहीं सुनते हैं वो इस तरफ खड़े हो जाओ. और सारे लोग इधर खड़े हो गए, बस एक आदमी इधर खड़ा हुआ. सारे मतलब उनने सोचा कि हमारे राज्य में सारे लोग बीबी के गुलाम हैं, सब इधर आ गए. एक आदमी था कि बीबी का बात नहीं सुनता हूँ खड़ा. एटलीस्ट एक आदमी तो है मेरे राज्य में, यू नो, इंडिपेंडेंट थिंकर. तो बोले, अच्छा आप अपने बीबी के बात नहीं सुनते? तो बोले, वो सब हमें नहीं पता. हाँ, मेरी बीबी ने कहा कि भीड़ में मत रहना. इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ. राइट. So nobody likes to be separate. Nobody likes to be the odd man. मतलब जो बाकी लोग सब कर रहे हैं उससे डिफरेंट कोई नहीं करना चाहता. सब भीड़ के साथ शामिल होना चाहते हैं, है ना? तो पूरा दुनिया जो कर रहा है वो ही हम भी करना चाहते हैं. दुनिया से हटकर अलग कुछ करना नहीं चाहते हैं. ये क्या है? इनसिक्योर, कमजोर, वीक मेंटालिटी. We should dare to be rare, or we should dare to do the right thing. What is right? Not what is popular. Not what is acceptable to people. ताकि मैं ऐसा करूँगा तो सब लोग मानेंगे हाँ तुम नॉर्मल हो. मैं ऐसा कुछ करूँगा, लोग बोले तो क्या हो गया तुमको? हाँ, हमें अलग हटके कुछ अलग नज़र से देखेंगे. So we want to be accepted by people. मैं किसी एक टीचर था, देखने में यंग दिखता था, पर मूंछ और दाढ़ी लंबा कर दिया. बोला क्यों ऐसा? बोले मैं टीचिंग करता हूँ तो मैं भी स्टूडेंट जैसा दिखता हूँ, बिकॉज आई वांट टू लुक लिटिल लाइक अ टीचर, देयरफॉर आई वांट टू कीप. सो एवरीवन इज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस. वी वांटेड टू बी रेस्पेक्टेड, एक्सेप्टेड, वैलिडेटेड. कोई ये ना सोचे कि हम कुछ गड़बड़ है, कुछ अलग है, और ऐसे सोचेंगे तो इमीडिएटली इनसिक्योर फील कर लेते हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी बिकॉज पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग मी. Right? So we should have the guts to know what is right and do what is right irrespective of what anyone may think. Right? ब्रिटिश वाले का शासन में, अंग्रेज के शासन में एक नियम बनाया एक अंग्रेज अफसर ने कि हमारे ऑफिस में कोई भी, मतलब सब लोग तिलक लगा के जाते थे, टीका लगा के. बोले हमारे ऑफिस में कोई टीका लगा के नहीं आना. नियम बना दिया, ऑर्डर दे दिया. तो अगले दिन से कोई तिलक नहीं लगाया, पर एक आदमी टीका लगा के आया. तो बोले इसको हिम्मत है. उनको बोला कि तिलक नहीं लगाना, फिर भी लगा के आया. तो फिर उनको बोला कि बाकी सबको बुलाया, ठीक है इस आदमी को हिम्मत है, ही हैज द गट्स टू डू व्हाट ही बिलीव्स, इसलिए आई गिव हिम द परमिशन. इस आदमी को परमिशन देता हूँ तिलक लगाने का, बाकी कोई नहीं लगा सकता. राइट. सो पॉइंट इज वी शुड बी करेजियस. हमें हिम्मत होना चाहिए वो काम करने के लिए जो सही है, चाहे दुनिया उसको एक्सेप्ट करे या ना करे. तो अब ये मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही है. दुनिया ड्रिंक कर रही है, दुनिया नशा कर रही है, दुनिया बॉलीवुड देख रही है, दुनिया बहुत कुछ कर रही है. तो दुनिया क्या कर रही है, हम भी उसी में शामिल होंगे. जो ऐसे सोचेगा मतलब यू आर नॉट इंटेलिजेंट एंड यू आर नॉट फिट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ. एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वही फिट है जो अपने इंटेलिजेंस को एक्सरसाइज कर सकता है, सही और गलत, परमानेंट और टेम्पररी में भेद कर सकता है. एंड ही हैज़ द कन्विक्शन एंड द डिटर्मिनेशन to always do only that which is right. So are you one of them or not? That is the question. So therefore वो knowledge आपको लेना है तो young age में ही लेना है. वो knowledge आप कोई, unfortunately I'll just take 2 more minutes. After that I'll invite others.
अनफॉर्चुनेटली आजकल मॉडर्न एज में लोग ज्ञान लेते हैं किससे? सिनेमा इंडस्ट्री से. मूवी इंडस्ट्रीज आर क्रिएटिंग मूवीज टू ब्रेन वॉश पीपल, राइट? लाइक रिसेंटली ये सारे मूवीज आए ना, ओ माई गॉड, राइट? PK. You heard of these movies? PK, oh my god, and what other movies? Oh my god, 2 भी आया, पता नहीं, I don't know. So, and they are preaching philosophy. What are they preaching? Philosophy. वो मूवी बनाया आपको ज्ञान देने के लिए बनाया क्या? वो तो पैसे कमाने के लिए बनाया. Are they ज्ञानीस? क्या वो लोग ज्ञानी है? They are entertainers. Their profession, they are professional in entertaining. They are not professional in knowledge. वो कोई गीता के प्रोफेसर नहीं है, वो कोई भागवत के प्रोफेसर नहीं है, वेदों के प्रोफेसर नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के प्रोफेसर है. तो एंटरटेनर से हम नॉलेज लेते हैं, एंड नॉलेज देने वालों से हम एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं. आजकल जो नॉलेज देने वाले गुरुज हैं ना, वो क्या करते हैं? वो एंटरटेन करते हैं. नो, गुरुज हैव बिकम एंटरटेनर्स एंड एंटरटेनर्स हैव बिकम गुरुज. सो दैट इज द कंफ्यूज्ड स्टेट वी आर इन टुडे. सो प्रवचन में जाते वी आर लुकिंग फॉर जोक्स एंड ह्यूमर एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. मज़ा आना चाहिए. और सिनेमा हॉल में जाते हैं वहाँ से उनसे ज्ञान लेने के लिए. हाँ. सो पॉइंट इज दैट वी आर सो कन्फ्यूज्ड. वाई? बिकॉज हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है. आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, व्हाट आर यू लर्निंग? डू यू लर्न एनीथिंग अबाउट लाइफ? डू यू लर्न एनीथिंग अबाउट हु आर यू, हु यू आर? डू यू लर्न एनीथिंग अबाउट गोल ऑफ लाइफ? Absolutely no. You only learn how to make money. That's all. Is that education? And you come out with a big degree and you think I'm so educated. It is simply increasing your false ego. Thinking that, oh, now I have a degree from such a prestigious institution. That means I should be knowledge. I should be a wise man. The proof is that I have a degree. So you need a paper to prove. You need a piece of paper to convince that you have knowledge. Right? So the point is, the real knowledge is not like that. Real knowledge is when you know what is right, what is the goal of life, and which makes you happy, which solves the problems of life, which makes you happy in any situation. Even in the middle of a battlefield, you are happy. That is real knowledge. Even in the most confusing state, Arjun said, I am in the most confused state. But after hearing Gita, he became happy. So, in our life, if you practice spiritual life, even if you have biggest problems, you will be happy. You will not be disturbed. That is a symptom of one who is in spiritual knowledge. Even in the worst situation, he is not disturbed. He is happy, peaceful, content. Profit or loss, honor or dishonor, happiness or distress, whatever, in any situation, he is always equipoised because he sees the hand of God behind everything. That is education. Education gives you character. Education gives you happiness beyond your senses. Right? Education gives you happiness which cannot be taken away in any situation. Situation के अनुसार जो happiness आता है ना, वो real happiness नहीं है. पैसा हो तो happy, पैसा नहीं है तो unhappy. Girlfriend मिली तो happy, नहीं मिली तो unhappy. That is happiness? No. That is animal level happiness. जानवरों का happiness है. इंसानों का happiness
उससे बड़ा है. पैसा हो ना हो, जो चाहे मिले ना मिले, कुछ भी हो या ना हो, you are always happy because you are connected with God. So that is education. That is real knowledge. And the right age for that is 50. So who is saying this? ISKCON? No. Prahlad is saying in Bhagavatam. ISKCON is not saying anything. ISKCON is not saying anything new. We are only repeating what is said by Krishna in Gita and what is said in Bhagavatam. As it is. Prabhupada used to say, if you are saying anything from your own mind, you are cheating. If you are saying anything from your own mind, you are cheating. So whatever you say, you should quote from Shastras. That is Shabda Pramana. Perfect knowledge. So I won't take more time because I want others also to speak. So, what is the time now? 4:30. So what we can do is, we can go for another 15-20 minutes, 15 minutes. And I would like, okay, here we have some devotees who are practicing spiritual life for quite some time and who are also guiding others. So I would like them to speak. I would like Dr. Venkatesh to speak for a few minutes. And after that we have Shukadev Prabhu. Shukadev Prabhu is, you all know, Shukadev Prabhu is currently working in TCS and he is passed out of Jabalpur Engineering College. He is preaching in many institutions. And we also have Abhimanyu Prabhu, who is currently studying, but he is also engaged in preaching. And he is preaching in GSITS as well as in, he is managing our center near Rani City. Yeah, we have limited time, so we just have wanted 3 speakers to speak. So you can speak maybe for 5 to 7 minutes each, and if you have any realizations you can share, and at the end you can ask questions after this. So maybe Prabhuji, you would like to speak a few minutes?